like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2023 exam conducted on 15th September 2023. To paper 1 total answer key here we discussing. So those who are new in our session, do like, subscribe and hit the bell icon for latest update. You may also join with me on Telegram channel link provided in description box. So let's start our session. First part, paper 1, booklet B. Part 1, child development. First question, innovative and creativity thinking is this type of thinking. In Hindi, नवान्वेषी एवं रचनात्मक सोच इस प्रकार की सोच है. For this question, right answer is option number 3, divergent thinking is the right answer for this question. भिन्न सोच is the right answer for this question. Next question. Question number 2. Identify the teaching learning approach that emphasize the fulfillment of needs, interests, abilities, etc. of learners. In Hindi, सिखाने के दृष्टिकोण की पहचान करें जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि की पूर्ति पर जोर देता है. For this question, right answer is learner centric, शिक्षार्थी केंद्रित. Third option is the right answer for this question. Next question, question number 3. One of the following considered as a development task in the early year of childhood. In Hindi, निम्न में बचपन को एक विकासात्मक कार्य माना जाता है. For this question, right answer is option number 4, developing self-control and emotional regulation. Fourth option is the right answer for this question. आत्मनियंत्रण और भावनात्मक विनियमन का विकास करना. Next question, question number 4. According to Erik Erikson's psychology theory, this stage of development occurs during adolescence and involves the struggle between identity formation and confusion. In Hindi, एरिक एक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विकास की यह अवस्था किशोर अवस्था में पहचान के निर्माण और भूमिका भ्रम के बीच संघर्ष शामिल है. पर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आइडेंटिफाइड्स रोल कंफ्यूजन. ऑप्शन नंबर 1, पहचान बनाम भूमिका भ्रम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question, question number 5. Learning a concept by knowing the interrelationship among the various elements of the concept reflects this learning theory. In Hindi, आपसी संबंधों को जानकर किसी अवधारणा को सीखना अवधारण के तत्व इस शिक्षण सिद्धांत को दर्शाता है. For this question, right answer is option number 1, insight learning. Option number 1, अंतर्दृष्टि is the right answer for this question. Next question, question number 6. The zone of paradoxal is related to this theory. In Hindi, समीपस्थ विकास के क्षेत्र इस सिद्धांत के संबंधित है. For this question, right answer is Vygotsky social constructive theory. Option number 3, Vygotsky की सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के is the right answer for this question. Option number 3 is the right answer for this question. Next question. 7th one, meaning of handedness is. In Hindi, सौम्यता का अर्थ है. For this question, right answer is predominant use of one hand, एक हाथ का प्रमुख उपयोग. For this question, 7th one, for this question, right answer is option number 2. Next question, question number 8. In project based learning. In Hindi, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण में for this question, right answer is scope for experimental learning is high. Option 4, अनुभवात्मक अधिगम की गुंजाइश अधिक है. Fourth option is the right answer for this question. Fourth option is the right answer for this question. Next question, question number 9. Who is called father of linguistics? इन हिंदी भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज
Noam Chomsky. For this question, right answer is Noam Chomsky is the right answer for this question. Next question number 10. A child concerned about self rather than other is called. एक बच्चा दूसरे बच्चों की अपेक्षा स्वयं की चिंता करता है तो उसे क्या कहते हैं? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज इकोसेंट्रिक. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज इकोसेंट्रिक. अहंकारी बालक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. एज पर the NCF identify the incorrect statement with respect to teacher autonomy. In हिंदी NCF 2005 के अनुसार गलत कथन की पहचान करें. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2. A teacher shall oblige the order of the higher authority without expressing their view on their issues. ऑप्शन नंबर 2. एक शिक्षक को बिना किसी परेशानी के उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. An amendment was made to RTI Act 2009 in 2019 with respect to these aspects. In हिंदी यहाँ पहलू के संबंध में 2019 में RTI अधिनियम 2009 में एक संशोधन किया गया था. For this question, right answer is option number 1, examination. Option number 1, pariksha is the right answer for this question. Next question, question number 13. The teacher observed that students are not showing empathy towards fellow students, hence decided to promote it among the students to bring about the change in the domain of students. In हिंदी एक शिक्षक ने देखा कि छात्र अपने साथी छात्रों के साथ सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए छात्रों के इस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए छात्रों के बीच इसे बढ़ावा देने का निर्णय लिया. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज इफेक्टिव डोमेन. For this question, right answer is option number 3, प्रभावशाली is the right answer for this question. Next question, question number 14. The students standing up in the classroom as a mark of aspects on teachers' entry into the classroom can be explained by this learning theory. In हिंदी शिक्षक के कक्षा में आने पर छात्र शिक्षक के सम्मान हेतु खड़े हो जाते हैं, इसे इस शिक्षण सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज कंडीशनिंग. ऑप्शन नंबर 2, कंडीशनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ए मोटर कार repaired a motorbike on the request of friend. The transfer of learning that happened here is, for this question right answer is positive 4. इन हिंदी एक मोटर कार मैकेनिक ने अनुरोध पर एक मोटरसाइकिल की मरम्मत की. यहाँ सीखने का क्या स्थानांतरण हुआ? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज सकारात्मक. 15th क्वेश्चन, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. ए चाइल्ड who has fear towards white rat subsequently develop fear towards all white object. This is, इन हिंदी जिस बच्चे को सफ़ेद चूहे से डर लगता है उसे बाद में सभी सफ़ेद वस्तुओं से डर लगता है, इसे क्या कहते हैं? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जनरलाइजेशन. ऑप्शन नंबर 2, सामान्यीकरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इन हिंदी निम्नलिखित में से यहाँ विकास का सिद्धांत नहीं है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलोज लीनियर पैटर्न. ऑप्शन नंबर 2, विकास सदैव रेखीय नमूनों का अनुकरण करता है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अकॉर्डिंग टू कोहेलबर्ग मेनी पीपल नेवर रीच टू दिस लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट. इन हिंदी कोहेलबर्ग के अनुसार बहुत से लोग नैतिकता के इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसका क्या कारण है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज पोस्ट कन्वेंशन. पारंपरिक
post is the right answer for this question. Next question 19th. To study the effect of motivation, a classroom teacher divide the class into two groups and announced prizes for only one group of the students. Both groups are equal in all aspects. Here this method adopted by the teacher is in हिंदी. प्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक कक्षा शिक्षक ने कक्षा को दो समूहों में विभाजित किया और छात्रों के केवल एक समूह के लिए पुरस्कार को घोषणा की। दोनों समूह अन्य सभी में समान है। यहाँ शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कौन सी है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शन नंबर 3 प्रायोगिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पीर लर्निंग टेक प्लेस अमॉन्ग दिस चिल्ड्रन। इन हिंदी, इन बच्चों के बीच सहकर्मी शिक्षण होता है। For this question, right answer is option number 4. All students, irrespective of their class, abilities, performance, etc. Option number 4. सभी छात्र चाहे उनकी कक्षा, योग्यता, प्रदर्शन आदि कुछ भी हो is the right answer for this question. Next question, question number 21. From the following, identify the statement that indicates learning. इन हिंदी, निम्नलिखित में से इस कथन की पहचान करें जो सीखने को दर्शाता है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए चाइल्ड नॉट टचिंग ए टी कप नोइंग दैट इट इज हॉट। ऑप्शन नंबर 4 एक बच्चा यह जानते हुए भी कि चाय गर्म है चाय का कप नहीं छूता is the right answer for this question. Next question, question number 22. The sequential steps preparation, incubation, illumination and verification are the part of this process. In Hindi, अनुक्रमिक चरण तैयारी, अध्ययन, रोशनी, सत्यापन इस प्रक्रिया के भाग है। For this question right answer is creativity. Option number 2. Option number 2 is the right answer for this question and रचनात्मक। रचनात्मक is the right answer for this question. Next question number 23. From the following, identify the sequence of teaching learning process. In हिंदी, निम्नलिखित में से क्रमानुसार शिक्षण क्रम की पहचान करें। For this question right answer is option number 2 pre-active, interactive, post-active. Option number 2 पूर्व सक्रिय, पारस्परिक, उत्तर सक्रिय is the right answer for this question. Next question number 24. A student who excel in sports exhibit average performance in academic. This reflect. In हिंदी, एक छात्र जो खेल में उत्कृष्ट प्राप्त करता है और पढ़ाई में औसत प्रदर्शित करता हो तो यहाँ किसे दर्शाता है? For this question right answer is option number 3 intra-individual difference. Option number 3 अंतर व्यक्तिगत मतभेद is the right answer for this question. Next question, question number 25. One of the following does not help in the improvement of memory among the children. In हिंदी, निम्न में से एक स्मरण बच्चे की शक्ति को बढ़ाने में मदद नहीं करता। For this question right answer is rote learning. रूट रटन सीखना is the right answer for this question. Next question, question number 26. A class 10 student learned algebra after learning geometry for their algebra interface in recalling the geometry. This is due to. इन हिंदी, 10वीं कक्षा के एक छात्र ने ज्योमेट्री सीखने के बाद बीजी गणित सीखा। बीजी गणित करने पर ज्योमेट्री हस्तक्षेप करता है, इसका क्या कारण है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज रेट्रोएक्टिव इनहैबिटेशन, पूर्वव्यापी निषेध इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. In the constructivist theories of learning, this represent the role of the teacher in the learning process. In हिंदी, सीखने के रचनात्मक सिद्धांतों में यह सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को दर्शाता है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. ऑप्शन नंबर 4 सीखने का सुविधाकर्ता is the right answer for this question. Question number 28.
द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इन प्रमोटिंग गुड स्टडी इन हैबिट्स इन द अर्ली ईयर ऑफ एजुकेशन। इन हिंदी, प्रारंभिक अवस्था में अच्छी अध्ययन आदतों को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी रणनीतियाँ हैं। For this question, right answer is option number 2, establishing a daily schedule including regularly study breaks and a dedicated study space. Option number 2, नियमित अध्ययन अवकाश सहित एक दैनिक कार्यक्रम स्थापित करना is the right answer for this question. Next question, question number 29. From the following, identify the key element of effective planning in early year of education. इन हिंदी, निम्नलिखित में आरंभिक शिक्षा प्रभावी योजना का प्रमुख तत्व है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इनकॉर्पोरेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड असेसमेंट मेथड। ऑप्शन नंबर 4, सीखने के उद्देश्यों, रणनीतियों और आंकलन पद्धतियों को शामिल करना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 30, this assessment is used to know the performance of the student at the end of the academic year. इन हिंदी, इस मूल्यांकन का उपयोग शैक्षणिक वर्ष के अंत में छात्रों के अध्ययन के प्रदर्शन को जानने के लिए किया जाता है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। योग्यात्मक मूल्यांकन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 2, हिंदी लैंग्वेज 1। 31, कवि और उनकी रचना के संबंध में गलत जोड़ी पहचानिए। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बाल स्वरूप सही धूप के धान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, डैश आप अमीर होते डैश दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यदि तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, महाराज ने सेवक को आदेश दिया। वाक्य इस काल का उदाहरण है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज भूतकाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश रेखांकित शब्द के पर्यायवाची है। धरती का आपको यहाँ पर पर्यायवाची पहचाना है। तो फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज अचला माही इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 35, आसमान को छूती मीनारें मिट्टी की मजबूत दीवारें रेखांकित शब्द है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वाक्य का शुद्ध रूप पहचानिए। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रेलगाड़ी में बड़ी भीड़ थी। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अरे समुद्र में तूफान आने वाला है। वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह पहचानिए। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कहानीकार कहानी लिखता है। वाक्य इसका उदाहरण है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज सकमक क्रिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैंने शमीम और ममता के साथ खूब खेला रेखांकित शब्द है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, परिणामवाचक क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है एंड कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र की पहचान के लिए कौन सी 3 बातें आवश्यक है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, भाषा, ध्वज, मुद्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, यह भाषा और संस्कृति दोनों के लिए घातक है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पर के निर्भरता इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देश की पहचान इससे नहीं होती है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी की खुशायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भाषा डैश को अभिव्यक्त
करती है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज संस्कृति. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. गांधी जी के अस्त्र थे? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज सत्य अहिंसा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट गद्यांश 46 to 50. फर्स्ट 46 पद्यांश का विषय क्या है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज हिंदी. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 47 हिंदी है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज भारत की बोली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1. 48 हिंदी किनकी भाषा है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 लाखों मुखड़ों की भाषा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हिंदी की सेवा से यहाँ मिलता है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन मेवा. नेक्स्ट 50 भारत की बोली को कैसे पनपने के लिए कहा गया है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अपने आप. नेक्स्ट क्वेश्चन 51 मन करता है पाठ के रचनाकार कौन है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्र विक्रम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कबीर के दोहे की भाषा क्या है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 साधु खड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 बढ़ते कदम पाठ की विधा क्या है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डायरी. नेक्स्ट क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से यहाँ पाठ जानवरों से संबंधित है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 आसमान गिरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हिंदी मेथडोलॉजी 55 व्याकरण शिक्षा की यहाँ विधि सूत्र प्रणाली से विपरीत है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज प्रयोग विधि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से यहाँ माध्यमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बालकों को इस योग्य बनाना जिससे कि वे पाठ्यक्रम से बाहर किसी अपाठित अवतरण को शब्दकोश की सहायता से पढ़ सके तथा उसे समझ भी सके इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ अल्प प्राण घोष दंत स्पर्श है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से यहाँ ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज प्रत्यक्षीकरण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से यहाँ भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हिंदी की कक्षा में अध्यापक कंप्यूटर का पाठ पढ़ाते समय पहले कंप्यूटर की विशेषता बतलाता है और फिर कंप्यूटर के भागों का वर्णन करता है अर्थात अध्यापक इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है? फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फर्स्ट वन पूर्ण से अंश की और इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट 3 English 61 identify the sentence in passive voice. For this question right answer is option number 4 the result have been announced recently is the right answer for this question. Next question number 62 the boy said that he did not understand that problem. This sentence can be written as for this question right answer is option number 3 the boy said I don't understand this problem is the right answer for this question. Next question number 63 choose the suitable question tag the girl goes to school every day question mark. For this question right answer is option number 1 does not she. Next question number 64 choose the correctly spelled word from the given option. For this question right answer is calendar is the right answer for this question. Option number 2 is the right answer for this question. Next question number 65 identify the part that has an error. For this question right answer is option number 4 C
is the right answer for this question. Next, question number 66. Choose the suffix that does not form a noun. For this question, right answer is option number 2, less. Next, question number 67. Choose the correct sequence of words to make a meaningful sentence. Sitting, is, who, behind, the wall, question mark, the man. For this question, right answer is option number 3. Who is the man sitting behind the wall is the right answer for this question. Next, question number 68. Identify the verb form to complete the sentence. Look someone. For this question, right answer is first one is crying is the right answer for this question. Next question number 69. In letter writing, your lovingly is a dash. For this question, right answer is option number 2. Subscription is the right answer for this question. Question number 70. Many other places in India. Choose the right option to complete the sentence. For this question, right answer is option number 4. Or as hot as Ramakundam is the right answer for this question. Next question. Question number 71. Captain calls opinion on women's that. For this question, 71, option 4 is the right answer for this question. They are nervous. Next question, question number 72. According to the passage, women argue that they dash choose correct option. For this question, right answer is option number 3, A and B only. Or as brave as men, B would remain calm in any emergency is the right answer for this question. Question number 73. But the men stuck to their theory. The theory talked about in the passage is. For this question, right answer is option number 2, that women are not brave. Next, question number 74. The people inside the room were comfortable. Choose the word which is opposite in the meaning underlined words. For this question, right answer is option number 3. Wretched is the right answer for this question. Next, question number 75. Dash put the men stuck to their theory. This can be understood as. For this question, right answer is the men are resolute is the right answer for this question. 75, 2 is the right option for this question. Next, passage 76 to 80 questions here given. So let's check. 76. For this question, right answer option number 4 was is. In 77, for this question, right answer is option number 2, which. Next, 78. For this question, right answer is when. Option number 1 is the right answer for this question. Next, question number 79. For this question, right answer is option number 3, in, in, in. Next, question number 80. For this question, right answer option is number 2, as if is the right answer for this question. Next, question number 81. Identify the imperative sentence among the following. For this question, right answer is please, option number 4, please give me a glass of water. Next, question number 82. The manager asked the member to put their views. Choose the suitable option to complete the sentence. For this question, right answer is across the table is the right answer for this question. Next, question number 83. Read the statement A and B and choose the right option. For this question, right answer is option number 4. Both A and B are correct. Next, question number 84. The old man has been living in the hut dash 2010. Choose the correct word to complete the sentence. For this question, right answer is option number 2. Since is the right answer for this question. Next, English methodology. Question number 85. Which of the following is not a theoretical assumption on language and language learning? For this question, right answer is option number 4. Language acquisition is a conscious process is the right answer for this question. Next, question number 86. The study of word formation is. For this question, right answer is monology is the right answer for this question. Next, question number 87. The title of Telangana State Board English textbook of primary class is. For this question, right answer is option number 2. My English World is the right answer for this question.
Next, question number 88. Which of the following is not a guiding principle of National Curriculum Framework 2005? For this question, right answer is option number 4. Scope must be given for single answer in place of divergent responses. Next, question number 18. And under which academic standard domain sequence the events can be tested? For this question, right answer is option number 3. Reading comprehension is the right answer for this question. Next, question number 90. Pick the future of discourse oriented of future. For this question, right answer is option number 1. In this pedagogy, the focus is on process but not on the product is the right answer for this question. Next, mathematics part 4, mathematics content. 91. Amar has a big scrap shop. One day he had received 46 kg 500 grams of old newspaper, 26 kg 675 grams of scrap iron and 9 kg 335 grams of waste plastic at his shop. Then the total weight of the scrap collection is option number 2 is the right answer for this question. 81 kgs 510 grams is the right answer for this question. Next, question number 92. 25 students in a class got the following marks for 10 marks in an assignment: 5, 6, 7, 5, 4, 2, 2, 9, 10, 2, 4, 7, 6, 9, 5, 5, 4, 7, 9, 5, 2, 4, 5, 7. The numbers of the students who got the least mark in this assignment is, for this question, right option is option number 3. 4 is the right answer for this question. Next, question number 93. Which of the following is a simple equation? For this question, right answer is option number 4. 4 plus 5 not equal to 7 is the right answer for this question. Next, question number 94. The value of square root 9 into square root 81 whole to the power of 1 by 2 is, for this question, right option is option number 4. 9 is the right answer. 95. Which is the greater among the following? For this question, right answer is 3 by 10 is the right answer for this question. Next, question number 96. Ravi has 14 red balls and 24 blue balls. Then the ratio of red marbles to the blue marble is, for this question, right answer is option number 3. 7 is to 12 is the right answer for this question. Next, question number 97. The twin prime number of the number 41 is, for this question, right answer is option number 4. 43 is the right answer for this question. Next, question number 98. Perimeter in centimeters of a rectangular sheet of a paper 5 2 by 3 centimeters long and 5 2 by 3 centimeters wide is, for this question, right answer is option number 3. 18. 2 by 15 is the right answer for this question. Next, question number 99. Ashok earned 400 per day in June 2022. He saved 3000 is in that month. The ratio of expenditure his income is, for this question, right answer is option number 2. 3 is to 4. Option number 2. 3 is to 4 is the right answer for this question. Next, question number 100. Euler's relation for polyhedron is, for this question, right answer is option number 1. F plus V is equal to E plus 2 is the right answer for this question. Next, question number 101. In 3rd January 2020 is a Friday. What will be the day on 14th November 2020? For this question, right answer is option number 4. Wednesday is the right answer for this question. Next, question number 102. Which of the following is not a characteristic of a frequency polygon? For this question, right answer is option number 1. Area of frequency polygon and histogram drawn from the same data are unequal is the right answer for this question. Next question. Question number 103. The number of edges of heterodron is, for this question, right answer is option number 1. 6 is the right answer for this question.
Next question number 104. The number of unit cubes required to make a large cube with an edge of 3 unit is. For this question right answer is option number 4, 27 is the right answer. Next question number 105. The equal sides of an isosceles triangle are 4.3 centimeters each and the other side is 3.5 centimeters. Then the perimeter of the triangle is. For this question right answer is 11:5 is the right answer. 4 option is the right answer for this question. Next question number 106. Earning of a vegetable vendor in a week are 220, 170, 200, 300, 320, 180, 190 and 190. Thus this average earning per day is. For this question right answer is option number 4, 210 is the right answer for this question. Next question number 107. For a non-zero integer a and integer m and n, if n greater than m, then the value of a to the power of m by a to the power of n is equal to. For this question right answer is option number 3, 1 by a to the power of n minus m is the right answer for this question. Next question number 108. Which of the following is not a Pythagorean triplet? For this question right answer is option number 4, 9, 12, 16 is not a Pythagoras triplet. For this question right answer is option number 4. Next 109. Ascending order of 9.601, 9.594, 9.09 and 9.504 is. For this question right answer is option number 2, 9.09, 9.505, 9.595, 94, 9.601 is the right answer for this question. Next question number 110. Two complementary angles differ by 14 degrees, then the angle R. For this question right answer is option number 2, 38 degrees, 52 degrees. Next question, question number 111. Value of square root of 1202 plus square root of 529. For this question right answer is option number 4, 35 is the right answer. Next 112. If Raju sleep for 1/4 part of a day, then the time spent by Raju in sleeping is. For this question right answer is option number 3, 360. Next question number 113. The cost of a notebook last year was 40. This year the cost of the notebook increased to 56. Then the percentage increase in its cost is. For this question right answer is option number 1, 40%. Next question number 114. Which of the following statement is true relating to geometry box? For this question right answer is 4. A, B, C, D and E is the right answer for this question. All options are right answer for this question. Next, mathematic methodology. 115. Arrange the following steps suggested by Herbert in writing lesson plan. For this question right answer is option number 3. A, D, B and C is the right answer for this question. Next 116. Read the following statement about the type of a question asked in the written examination. For this question right answer is option number 2. All statements A, B, C are true is the right answer for this question. Next question number 117. This lead to children being taken to community resource. For this question right answer is field trip. 1 is the right answer for this question. 118. For this we use the multiplication process to calculate in a micro method. For this question right answer is option number 2, instead of doing repeated addition. Next question number 119. A student is able to write rational number in decimal form. Then the student attained this academic standard. For this question right answer is option number 1, visualization and representation is the right answer for this question.
Next, question number 120. Identify the characteristics of activities to be provided to perform activity-based method effectively. For this question, right answer is option number 4, A, B, C only. Next, environmental studies, part 5, content. 121. The method of preparing idli is among the following. For this question, right answer is option number 2, streaming. Next, question number 122. The leaf lamina usually does not consist of. For this question, right answer is stem is the right answer for this question. Next, question number 123. Water level in the reservoir is measured in. For this question, right answer is gallon is the right answer for this question. Next, question number 124. The doctor who treats the diseases related to skin is called dermatologist. Option number 3 is the right answer for this question. Next, question number 125. Identify the green gas from the following. For this question, right answer is option number 2. Methane is the right answer for this question. Next, 126. The founder of modern science of nutrition. For this question, right answer is option number 3. Lavoisier is the right answer for this question. Option number 3. Next, question number 127. Among the following, the objective of Constituent Assembly were. For this question, right answer is option number 2. 2 and 3 only is the right answer for this question. Next, question number 128. Among the following, not a fundamental principle of Constitution of India. For this question, right answer is presidential form of government is the right answer for this question. Fourth option. Next, 129. The leeward side of Araval Mountain is. For this question, right answer is option number 3, the Thar Desert. Next, question number 130. In Holland, the people have reclaimed a small portion of land from the sea by building embankments called dikes to push back the sea. The land is called polder. Is option number 1 is the right answer for this question. Next, question number 131. The king who built the temple of Kanderiya Mahadev was. For this question, right answer is option number 2. Dhangadev is the right answer for this question. Option number 2. Next question 132. The number of separate vertebrates in the backbone of an infant are. For this question, right answer is option number 3, 33. 133. Insectivorous plants among the following. For this question, right answer is option number 2. Uticularia is the right answer for this question. Next, question number 134. Identify the correct pair from the following. For this question, right answer is option number 1. New plants grow from buds of the leaf is called Breviolum is the right answer for this question. Next, 135. Rice is largely composed of. For this question, right answer is option number 4. Carbohydrate is the right answer for this question. Next, question number 136. One among the following not a fundamental duty of a citizen. For this question, right answer is option number 3. Prohibition of all forms of forced labor is the right answer. Next, question number 137. The people who said that Vijayanagara city had 7 rings of fortification. For this question, right answer is Abdul Razak is the right answer for this question. Next, question number 138. Which of the following not a child's right? For this question, right answer is option number 4. Right to equality is the right answer. Next, question number 139. How many village panchayat meetings should be held every month and minimum number of people should be present for each meeting? For this question, right answer is option number 4. One meeting every month, minimum 50% attendance is the right answer for this question. Next, question number 140. The diseases caused by stagnant water among the following. For this question, right answer is option number 4. Diarrhea is the right answer. Next, question number 141. This is diseases causing harmful organism present in wastewater. For this question, right answer is option number 3. Chlorine is the right answer.
Next, question number 142. An element used for industrial and medical purpose. For this question, right answer is barium is the right answer for this question. Next, question number 143. In this corner of India, Nepal is located. For this question, right answer is option number 4. North East is the right answer for this question. Next, 144. The people of Indus used to trade with this country which had many developed cities. For this question, right answer is 1. Iraq is the right answer for this question. Next, methodology 145. These maps are more helpful to the teacher to teach about the mountain, plateau, river, valley and desert in a real and natural manner to the students. For this question, right answer is option number 2, relief maps. 146. Match the following A and B. A, conceptual understanding comes under. 2, classification, explanation. Next, B, information skills comes under interpretation of data. Drawing map, option C, drawing maps comes under. Fourth option, reaching destination with Google location. Next, D, appreciation values comes under. First, respecting other is the right answer for this question. So option number 3 is the right answer for this question. Next, question number 147. Identify the teacher-centered method from the following. For this question, right answer is option number 2. Historical method is the right answer. Option number 2. Next, 148. The EVS textbook at primary level should be designed like this. For this question, right answer is option from known to unknown. Next question, question number 149. A teacher explained to the students about the habitat of Eskimos, their houses, igloos by making a three-dimensional miniature model with cotton and cardboard. This is a for example of option number 2. Diorama is the right answer for this question. Next, 150. Among the following, which one included in the main aspects of environmental studies? For this question, right answer is A, B, C, D, E. Option number 4 is the right answer for this question. In next session, we will meet you. Until then, keep smile. Bye-bye.